Oh, very good evening, all of you. You have taken time, came here, so uh, I don't want to waste your time. So I'll tell some things which will be very important from my side, and what went in my way, so I could clear UPSC in my first attempt. Uh, and I scored interview. I scored 206 in my interview, which I didn't expect when I was preparing for my interview. So let's start the session. Mm, Okay, they have given me a format to ओके ठीक है मुझे मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं रहता क्योंकि मैं साउथ से हूँ ठीक है आई विल ट्राई बिकॉज आई स्टडीड इन राजस्थान फॉर 4 years मैं ट्राई करूँगा लेकिन थोड़ा इधर उधर गलती हो जाए तो डोंट डोंट माइंड ओके मेरे को एक फॉर्मेट दिया है इधर तो मैं उस फॉर्मेट को फॉलो करूँगा आप उसके बाद मैं आपका क्वेश्चंस लेके आपका डाउट्स भी सॉल्व करूँगा. Okay, guys, I'll tell briefly about myself. My name is Ashrith Shakamori. This is my first attempt. I've done my civil engineering from Bitspilani, Rajasthan. And then immediately after my engineering in 2021, I started preparation. This is my first attempt, and I've gotten rank 40. मेरा यूपीएससी जर्नी बिकॉज मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था क्योंकि पूरा आर्ट्स में मतलब याद करने के लिए होता है और कॉन्सेप्ट्स थोड़ा कम कम होता है इजी होता है लेकिन ज़्यादा याद करने के लिए होता है वो थोड़ा अलग रहा था एंड मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है उसमें भी आई ऑलवेज थॉट आई शुड हैव टेकन अ साइंस बैकग्राउंड थिंग but it all worked in my favor. Um, yeah, I have taken coaching from Vajiram and Ravi, which is a 10 months course, which started in May 2021 and ended in somewhere March 2022. Yes, I'm giving a timeline for the entire exam. Please wait. Mm, I've started my coaching in May 2021. Exam was in June 2022. So my thing was, give me 1 second. I'll see all of your questions at the end. Many people are asking about newspaper. I believe newspaper is the most important part of the preparation because uh, see, one is knowledge. One thing is knowledge. Second thing is awareness. This exam checks awareness as much as it checks knowledge. So most of the questions in the interview in the mains, you need awareness uh, equally as knowledge. That is why I read newspaper religiously for all along the year. I read newspaper magazines for knowledge purpose, but I read newspaper for awareness purpose. If let's say I did not get a question in mains, with that awareness only, I could write that answer. I'm not seeing your questions, guys. Please don't mind. I'll finish whatever format जो फॉर्मेट उन्होंने दिया है मैं उसको फॉलो करूंगा उसके बाद आपका क्वेश्चंस देखूंगा मैं ठीक है ओके हाँ एनसीईआरटीज फॉर बिगिनर्स बिगिनर्स के लिए ही होता है एनसीईआरटीज क्योंकि आप जब रेफरेंस बुक्स लेते हो तो समझने में थोड़ा टाइम लगता है उसके आगे आपको एनसीईआरटीज पढ़ना है क्योंकि वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में होता है आपको बेसिक्स कवर हो जाता है और आपको न्यूज़पेपर और एनसीईआरटीज मिला के पढ़ना है तो आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा उसके बाद आप जब रेफरेंस बुक्स पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा तब इसमें यूपीएससी एग्जाम में ज़्यादा याद करने के लिए रट्टा मारने के लिए होता है मतलब तो बहुत कम कॉन्सेप्ट्स वेरी फ्यू कॉन्सेप्ट्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अदरवाइज it is a very easy exam from the perspective of using your intelligence. आपका पूरा इंटेलिजेंस प्लान करने में और स्ट्रैटेजी डालने में होता है उसके बाद इट्स ऑल अबाउट रिमेम्बरिंग थिंग्स एंड नोइंग मोर अबाउट थिंग्स ओके please don't put your questions guys don't mind I'm unable to concentrate I'll finish this as soon as possible see I have taken coaching from Bajiram for both GS and optional my optional is anthropology
and I picked optional in such a way that it should have both scoreability and my interest. So you have to balance both, like a seesaw. बचपन में खेलते थे ना seesaw पे. So you have to balance both, because if you take it out of interest and scores कम है, like for example literature subjects में कभी-कभी scores 260 270 highest आता है, वो anthropology में average रहता है, ठीक है? तो so और interest में interest you have to consider interest as well, because you have to travel with that subject for at least 2 to 3 4 years depending upon which attempt you are going to crack. So you have to balance both and take that optional. uh, और मैं see ठीक है, I'll will go with the flow. I'll deal with your questions only. Okay. uh, how to prepare short notes? See, short notes I believe is for mains only, not for prelims, because prelims के लिए you read very few books like NCRTs. History के लिए spectrum, uh, after NCRTs history के लिए spectrum, and then polity के लिए Lakshmikant. और I read Shankar Ganeshan for concepts in economy, and then PMF IAS book for environment. These are the reference books I followed. Other than that, for NCRTs I studied. For economy, it is 11th Indian economic development and 12th macroeconomics. For environment, it is 12th class biology textbook, the last 4 chapters, 13 to 16 chapters. And then for history, please study old NCRTs, because new NCRTs, it is I've studied new NCRTs myself, but when I saw the question papers, उसमें बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे थे न्यू एनसीईआरटीज में से, तो मैंने फिर से ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ के गया. तो आप पहले ही ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ लो. हिस्ट्री में सतीश चंद्र का मेडिवल हिस्ट्री के लिए होता है, और आर एस शर्मा जी का बुक एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, और बिपिन चंद्रा का बुक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए. वो 3 एनसीईआरटीज है. तो फॉर ज्योग्राफी यू हैव 11th एंड 12th बुक्स, सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी एज वेल एज फिजिकल ज्योग्राफी. ये सब बेसिक होता है, बेसिक बुक्स. और पॉलिटी के लिए यू हैव फॉर 11th क्लास कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. ये सब बेसिक चीजें पढ़ने के बाद तो आप रेफरेंस बुक्स पे जाइए. सी, यूपीएससी एग्जाम इज टेस्टिंग अ पर्सनालिटी more than knowledge. Apart from knowledge, it's testing your personality. So you have to be as much aware as possible when it comes to things around you, things about your state, about your country, and about the world. I have drawn down a technique in saying which topics are important and which are not. I'll tell you, please note it down. The things which are important for India specifically, and things which are important for humanity, they will definitely show up in the question paper sooner or later. Because as administrators, as problem solvers, these are the questions you have to address once you get into the job. आप जॉब पे आने के बाद जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए होता है, वही एग्जाम में आने के लिए चांसेस ज़्यादा है. तो उस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए. प्रीलिम्स स्मार्ट स्ट्रैटेजी, तो प्रीलिम्स के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, आप जितने भी पढ़ लो, फाउंडेशन आपका अगर ठीक है, और उसके बाद आप ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ा है, फ्रॉम करंट अफेयर्स मैगजीन्स एज वेल एज करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर आपको छोड़ना ही मत, बिल्कुल. कुछ टॉपर्स है, मतलब वो बिल्कुल बिना न्यूज़पेपर से उन्होंने क्लियर कर दिया है, लेकिन बट आई एडवाइज you to go through newspaper. I did not read the entire syllabus for mains, but I got this rank with the help of newspaper, because my awareness level was very big. Even if I did not cover a topic from the syllabus, I could write an answer. मैं आंसर लिखता था न्यूज़पेपर से अवेयरनेस जनरेट होने के बाद. तो दैट इज व्हाई न्यूज़पेपर इज इम्पोर्टेंट. और करंट अफेयर्स, उसके प्रीलिम्स ज़्यादा ट्रिकी है. मतलब प्रीलिम्स में आपको सिर्फ वो फिल्टर करने के लिए रखा है वो एग्जाम ने. मतलब इफ 1 लाख लोग, 5 लाख लोग डायरेक्ट मेंस लिखते हैं, तो उनको करेक्ट करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है यूपीएससी वालों को. तो एक प्रीलिम्स एग्जाम से एक फिल्टर लगा है टू कट डाउन
people who can write mains. That is the only purpose of prelims. They are not checking anything, so they can cross lines in the form of CSAT, in the form of paper one also. They can cross lines, go outside the borders, and give questions. So in situations like these, अगर आपको प्रीलिम्स पास करना है तो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग रखिए. इन द नेम आई मीन बाय फाउंडेशन आई मीन एनसीईआरटीज, न्यूज़पेपर एंड बेसिक रेफरेंस बुक्स. उसके बाद आपको गेस करने के लिए होता है. आई मीन how much ever you read, 40-45 questions is the maximum that you can put confidently in the exam. रफ टाइमलाइन, आई विल गिव यू अ रफ टाइमलाइन. मैंने पर्सनली अक्षत जैन सर का 2018 में उनका सेकंड रैंक आया था, तो मैंने पर्सनली उनका स्ट्रैटेजी फॉलो, नियरली उनका स्ट्रैटेजी बेस करके मैंने एक बनाया हूँ. तो फर्स्ट 4 months आफ्टर स्टार्टिंग प्रिपरेशन, फ्रॉम जुलाई, August, September, October, I prepared optional. And then the next 4 months I prepared main subjects. And then next 4 months, next 2-3 months, I relied complete I prepared completely for prelims. July, August, September, October, completely optional, along with newspapers and basic NCRT reading. And then November, December, January, February, I focused on main specific subjects like world history, post-independence India, disaster management, environment, all these extra subjects that which are not there in prelims, as well as prelim subjects. And finally, March, April, May, in these 3 months, I focused completely on prelims because it was my first attempt. I did not have the confidence that I could clear prelims. So I studied ancient history, medieval history, modern history, art and culture, environment, polity, economy, geography. These are the subjects you have for prelims. I studied only these subjects in the last 3 months. After I cleared prelims, I came back to those subjects which are specifically there for mains. Mhm. Uh, uh, One person has asked me, आपने क्या किया है ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है. ऑनेस्टली आई डिडंट थिंक, मैंने सोचा नहीं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा, लाइक बट आई हैड नथिंग टू लूज, so I went there confidently. Also, one reason I got IAS in first attempt is my interview. I got 206 in my interview. Otherwise, I would have gotten IPS in first attempt. See, I have done everything. I did not leave any stone unturned. मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा हूँ, मैगजीन्स पढ़ा हूँ, all NCRTs पढ़ा हूँ, all basic reference books पढ़ा हूँ. I have written many test series. मतलब मैंने I have written at least 16 to 20 full length tests during mains. And 1 hour test तो मैंने 20-25 लिख के गया. तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया. और even if I didn't get, I did not have to lose anything. I could have attempted second time or third time. करंट अफेयर्स के लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हो. मतलब वाजीराम यू कैन फॉलो, विजन यू कैन फॉलो, देयर इज वन शून्य व्हिच माय फ्रेंड्स हैड फॉलोड. You can follow anything, but follow one book religiously. How to read see how to read NCRTs for beginners. वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ गए. What are the mistakes to avoid according to me? uh, for some mistakes I can point out. I haven't done many, that is why in first attempt I'm here, but I've seen some people doing these mistakes. फर्स्ट ऑफ ऑल योर माइंडसेट. आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि जितने भी पढ़ो, आपका ऐसा होना चाहिए, आई हैव लर्नड अ लॉट, आई विल लर्न मोर, आई एम रेडी टू लर्न मोर, आई एम रेडी टू लर्न मोर. You should be in such a mindset because you will continuously uh, gather information. You try to remember it. One, you don't be proud of whatever you learn. You keep on learning. And शुरू में आपको नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि आप if you start making notes from the beginning, you will note down everything. You'll note down everything. You won't know what is important and what is not. uh,
न्यूज़पेपर समझने में मेरा शुरू में मेरा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए 3 से 3.5 घंटे लगते थे और बाद में वो कम होके आई कुड फिनिश न्यूज़पेपर इन 45 मिनट्स टू 1 आवर। व्हिच बुक्स आई यूज्ड फॉर मेंस पीवाईक्यू के लिए मैंने कुछ आई डिड नॉट बाय एनी बुक्स। पीवाईक्यू के लिए मैं एक मृणाल सर का एक बुक खरीदा था। सॉल्यूशंस के लिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा। I searched my solutions from Google. If you type that question and put Drishti IAS or UPSC, you will get that solution for that question. Mhm. For current affairs, I studied both newspaper as well as Vision IAS monthly magazines. और एक ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आया। Um, my daily timetable, uh, I used to study for 8 hours, 8 hours a day normally. But between prelims and mains, I studied for at least 14 to 15 hours because I could not finish my entire syllabus before. I had to finish in that duration. न्यूज़पेपर में कम से कम 3 साल से पढ़ रहा था। 2021 जनवरी में स्टार्ट किया मैंने। I this is my first attempt. For someone who is asking, I don't want to take his name. Yes, this is my first attempt. Okay. My newspaper. I have been studying newspaper since January 2021. मई 2021 में मेरा कोचिंग स्टार्ट हुआ है और जून 2022 में मतलब विद इन 1 year आफ्टर 1 year आफ्टर माय कोचिंग स्टार्टेड आई गेव माय प्रीलिम्स। मंथली मैगजीन्स में रफली 1 साल के लिए पढ़ा हूँ। मतलब मई 2021 से जून 2022 तक। आई एम फ्रॉम वरंगल विच इज इन तेलंगाना। How to start, where to start? Please start with NCRTs and newspaper, nothing else. Because most of who are not from arts background, we won't know where to start. So please start from NCRTs. We have left social sciences in our school times. So go back to those books. Study from 6th to 12th if you don't understand 11th and 12th directly. But 11th and 12th books are enough if you understand those books. If you don't understand, go back to 8th, 9th, 10th. If you don't understand those also, then go to 6th and 7th. Like if you understand, just study 11th and 12th. This is a very important question. Test series marks improve kaise kare and analyze kaise kare. See, my test series, I have gotten maximum 97, 95 to 100 is the maximum. But in my final one, for GS, I have crossed 40. I mean, my total is 403. And I never back down when I got poor scores. If you type Vision IAS, Ashrith answer sheets, they'll be very poor marks. But I was always like, uh, that is just to check my own performance. They will have a solution booklet. I can speak in Telugu, but not everybody will understand. I'm sorry. Okay. So in test series क्या होता है कि they will be given a solution booklet, right? And your answers will be corrected according to those solutions. I mean, solution answer, model answer. If you don't have any points from that solution, you won't be given marks. But I was like, I've taken all my points from newspapers, from random sources. They may or may not be there in the model answer of a reputed institute. So I did not worry about marks given to me in test series. For example, for anthropology, I've written only 3 tests, and my highest in those 3 tests was 96. मेरा एंथ्रोपोलॉजी टेस्ट सीरीज में हाईएस्ट 96 था एक पेपर में, हाईएस्ट। और मेरा फाइनल स्कोर्स था 156 and 142. How did that happen? I did not consider those marks which they gave me in test series. I have only taken those comments and suggestions that they have given and improved on my answers. उससे ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने. See, I will go paper wise now.
For essay, you don't need any special knowledge. I've written normal essays with basic knowledge from. I have written Mudit Jain sir's video I have watched on YouTube, and Anudeep Durshetty sir's uh, essay part in his book I have studied, which is a which is the basic outline. What is that? Political, social, economical, um, environmental, science, technology, international, ethical. Uh, in these, I've picked up only philosophical topics